Good morning, Devasis. Good morning, sir. The writing executable statement. Objective कौन कौन अच्छे देखा. After completing this session, we should be able to do the following: identify lexual units in a plsql block, use built-in SQL function in plsql, describe when implicit conversion takes place and when explicit conversion have to be dealt with. Write nested blocks and qualify variable with labels. Write readable code with appropriate identification. Use sequence in plsql expression. Right? ये सब हमें objective माने इस सेशन में हमें जानना. Writing executable statement in a plsql block. Lexual unit in plsql block. Lexual unit कौन देखा? Are building block of any plsql block are sequence of character including letters, numerical tabs, space, returns and symbols. Right? ये सब unit रे मोरो ये सब जिनसे मोरो आसे तरह involvement आसे. Right? Can be classified as then identify as v first name, c parent. Right? That was a variable name. Then delimiters तमरा plus semicolon, comma, hyphen एगुड़ा सब मोर आसीबो मोर डेलिमिटर. लिटरल रे मोर वैल्यू आसीबो. राइट. एंड कमेंट रे मोर एटा होची सिंगल लाइन कमेंट, एटा होची मल्टी लाइन कमेंट. राइट. एटा होची तमरो सिंगल लाइन कमेंट, एटा होची तमरो मल्टी लाइन कमेंट. राइट. डॉक्यूमेंटेशन पे lexical unit in a plsql block. Lexical unit include literal, numeric, special characters, tabs, space, returns and symbols. Identifier means are the names given to plsql objects. You learn to identify valid and invalid identifier. Recall that keyword cannot be used as identifier. Identifier माने variable name, right? Variable name तमरो valid भी थाए, invalid भी थाए, right? Valid variable name जोटा कि हमें previous chapter माने को पढ़ते हुए variable declaration केमती हुए. Invalid declaration तमरो कभी भी number रू start होबनी, right? Variable ना कभी भी number रू start होबनी. Variable नाम सदाळे मोरो letter रू start होबो. And variable ना मझिरे तमे कभी भी space दबनी. Space जगह रे तमे underscore देते. Quoted identifier make identify case sensitive, include characters such as space, use reserved word, right? For example, begin date dabo, date hochi mon data type, end date expression thrown boolean default is true. All subsequent uses of this variable should be double quotation marked. However, used for quoted identifier is not recounted, right? जदि तमे space दबको चाहंतो तो से वेरिएबल टाकू सदा डबल कोटेशन भितर रखिबो. जो डबल कोटेशन भितर रखिबोनी ताले तुमको एरर थ्रो करिवो. राइट. Delimiter are symbol that have special meaning. You already learned that the semicolon, right? हमें Oracle ले हमें PLSQL semicolon use करिचे. सबु end रे मोर semicolon रहिचे. Is used to terminate SQL or PLSQL statement. Semicolon meaning कोन? जेमि तमे सेंटेंस रे गोटे तम फिजिकल सेंटेंस रे फुल स्टॉप दोछ. फुल स्टॉप माने कोन? टू एंड ऑफ द स्टेटमेंट. सेमिति ओराकल हो किबा लैंग्वेज हो जदि गोटे स्टेटमेंट को एंड करिवार अछि ताले सेठी सेमिकोलन दिया जाय. फुल स्टॉप जगह रे सेमिकोलन दिया जाय. राइट. फॉर मोर माने इंफॉर्मेशन तमो एई गाइडलाइन रे तमो मिल जिवो. लेक्सिकल यूनिट इन ए PLSQL block. Delimiter are simple or compound symbol that have special meaning in PLSQL symbol. That is plus, minus, into, divide, equal, @ semicolon. Plus addition तमरा minus होची subtraction or negation रू operator तमरा. Into multiplication, divide, division,
equal, equality operator, @ remote access identifier, the semicolon terminate statement. Compound symbol, that is greater than less than माने equality operator, right? Double equal to जोटा हमें language जोटा दो एठी तमरो greater than और less than symbol use करते, not equal to, unequal to operator, right? or concatenation operator माने तमे गोटे string दोचो से string को concatenate करके आ गोटे string दबा को चाहछो ताले मझिरे तमरो एई symbol टा double type symbol टा तमरो रहे, right? and begin comment, it was a begin commenter symbol, it was end commenter symbol, and assignment operator तमरो होची एटा, right? जेमते हमें value assign कोचे variable तो हमें कोन होची colon then equal, right? This is only a subset and not complete list of delimiter. Literal, any value that is assigned to a variable is a literal. Any character, numerical, boolean or date value that is not an identifier is a literal. Literal are classified as character literal. All string literal have the data type char or varchar2 and are therefore called character literal. For example, John and 112C, right? It a value number. Numeric literal, the numeric literal represent an integer or real value. For example, एतिकी रु एतिकी जाय मु numeric value accept कर परी सेमिति तमरो character letter रु तमरो 12 character जाय तमे accept कर परी, right? boolean literal तमरो true false और null को accept करे, right? keyword तमरो accept करबो नाही. Comment, it is good programming practice to explain what a piece of code is trying to achieve. However, when you include the explanation in plsql block, the compiler cannot interrupt these instructions. Therefore, there should be a way in which you can indicate that these instructions need not be compiled. Components are mainly used for this purpose. Any instruction that is commented is not interrupted by the compiler. 2 hyphens is used to single line comment, जोटा कि मुझे कहली दुईटा hyphen जदि किसी तमे दउछ जदि सेटा हो single line comment. comment को अपन दबा गोटे प्रोग्राम को well defined करिया पे तम comment जदि एटा हो ऑप्शनल देले चलिबो न देले चलिबो. जदि तमे बुझिया पे चाहूछो का गोटे रिपोर्ट जनरेशन करिया पे चाहूछो कोन करूछो कोन नै बोली सेठी प्रत्येक स्टेटमेंट रे तमे comment दोछ. जेमिति आमे एग्जांपल जो आमे एठी पढु जे जो तो प्रत्येक लेखि दउछि जे एटा एठी पे डिक्लेयर हला सेटा सेठी पे डिक्लेयर हला. तो से कमेंट हमरो दी प्रकार है पारे, गोटे हो सिंगल लाइन कमेंट, गोटे हो मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट पाई तुमको डबल हाइफेन सिंबल यूज करिया को पड़िबो एंड मल्टी लाइन कमेंट पाई तुमको एटा स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश यूज करिया को. स्लैश स्टार होची तमरो बिगिन कमेंट एंड स्टार स्लैश टा होची तमरो एंड कमेंट. बुझला? plsql block syntax and guideline. Using literal, character and date literal, you must be enclosed in a single quotation marks. Number can be a simple value in a scientific notation, right? Character और date को तमु जेता indicate करिया को पडुची सेटा single quotation दब. but जेता numeric value जेता पास करिवो सेटा तमे normal तमे किछि single quotation दरकार नै, तमे खाली normal value तमे पास कर. बुझला? फॉर एग्जांपल जम दे देछि तम कैरेक्टर वैल्यू गोटे पास करछि जोटा कि सिंगल कोटेशन भीतर वेरिएबल भीतर तुमको स्टोर करी से देखै. बुझला? फॉर्मेटिंग कोड स्टेटमेंट कैन स्पैन सेवरल लाइंस. इट इज एडीसी देछि डिक्लेयर करछि गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करछि जोटा कि varchar2 तमरो डिक्लेयर देछि तार डाटा टाइप देछि. बिगिन देछि सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100, राइट? सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू तमरो वेरिएबल नाटा देला वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100. एम्प्लॉय आईडी जहार 100 थिबो तार फर्स्ट नाम रिट्रीव करिवो एंड स्टोर करिवो कोठी तमरो वेरिएबल रे तम स्टोर करी, राइट? तो एठी से फॉर्मेट देछि, राइट? फॉर्मेट रे तमो से शो करछि एठी डिक्लेयर कला गोटे. देन सिलेक्ट फर्स्ट नेम कंप्लीट कोड टाइप दे. सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू वेरिएबल नेम फ्रॉम को टेबल एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 100. बुझला? In plsql block syntax and guideline, using literal. A literal is an explicit numeric character string, date or boolean
value that is not represented by an identifier. Character literal include all printable character in the PLSQL character set, require numerical numerals, space, and special symbol. Numeric literal can be represented either by a simple value, that for example numeric value, or in scientific notation, for example this one, right? It has more scientific value, right? Character literal तमरो character भी pass कर परियो, space भी pass कर परियो, and special symbol माने @ dollar, exclamation symbol एगुड़ा सब तमे pass कर परियो. बट न्यूमेरिक वैल्यू रे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू या फिर साइंटिफिक नोटेशन तम जो साइंटिफिक न्यूमेरिक वैल्यू जोटा रहउची सेटा भी तम पास कर न्यूमेरिक डाटा टाइप बुझला. Formatting code in PLSQL block a SQL statement can span several lines as shown in for example 3 in slide. You can format on an unformatted SQL statement as shown in XML1 in the slide by using the SQL worksheet shortcut menu. Right click the active SQL worksheet and the shortcut menu that appears. Select the format option, for example 2, right? এটা হচ্ছে মোর লিটারাল মানে কমপ্লিট স্টেটমেন্টটা, এটা হচ্ছে মোর ফরম্যাটিং ফরম্যাট চেঞ্জ করব বুঝলা. কমেন্টিং কোড কমেন্ট দেখো কেমন কমেন্ট করা যায়. প্রিফিক্স সিঙ্গল লাইন কমেন্ট উইথ 2 হাইফেন্স and place a block comment মানে multiple line of comment between the symbols this and this. Declare गोटे variable declare कला begin comment declare कला देखो compute the annual salary based on the monthly salary input from the user. जो इनपुट टा दबो यूजर जो सैलरी टा इनपुट दबो तार एनुअल सैलरी से कंप्यूट करे माने कैलकुलेशन करी बाहर करियो. केमि बाहर करियो? मंथली सैलरी इनटू 12 मंथली सैलरी रे जो वैल्यू टा अछि इनटू 12 करिवो सेटा कोड स्टोर करिवो v_annual salary रे. एटा होछि वेरिएबल ना. The single line comment देखो दिया है the following line display the annual salary dbms output dot print underscore line तापरे तमरो वेरिएबल नाटा पास कर दे माने मंथली सैलरी रे जो वैल्यू टा अछि इनटू 12 करी जो वैल्यू टा आसीबो सेटा मोर वेरिएबल भीतर रहला से वेरिएबल टा को डिस्प्ले करिया पे हमरो प्रथम रो हमें जानि छे आउटपुट जानिया पे हमें केमति यूज करू dbms underscore output dot put underscore line. एटा होछि SQL सर्वर रो कमांड टा आउटपुट जानिया पे, right? Commenting code, you should comment code to document each page and assist debugging. In PLSQL code, a single line comment is commonly prefixed with 2 hyphens. You can also enclose a comment between the symbols. This note for multiple line comment, you can either precede each comment line with 2 hyphens or use the block comment, right? Multiple comment by each statement तमे hyphen दे पारे या फिर तमरा slash star slash and end करिवो star slash रे बुझला. SQL function in PLSQL available procedural statement single row function note available in procedural statement decode and group function. एटा कोन देखो एठी SQL function in PLSQL statement, right? SQL provides several predefined functions that can be used in SQL statement. Most of these functions such as a single row number and character function, data type, conversion function and date time and time span function जोटा कि हमें आगुरु पढ़ी छे are valid in PLSQL expression. जोटा SQL रे हमर थिला जो फंक्शन रा SQL रे थिला सेटा हमर PLSQL रे भी अवेलेबल अछि, right? The following functions are not available in procedural statement. Is जिनसटा हमरा available नहीं जोटा कि decode, group function, average, mean, max, count, sum, std diff, standard difference, then variancy. Group function apply to group of rows in a table and are therefore available only in SQL statement in PLSQL block. The function mentioned here are only a subset of the complete list. SQL function in PLSQL example get the length of a string कोरे डिक्लेयर कला, राइट? वेरिएबल डिक्लेयर कला तार साइज देला केते इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर तार साइज देला केते 5 देला, राइट? देन v period product
underscore description varchar 2 dala setre value pass kala kono you can use this product with your radius for higher frequency. Then comment pass kala get the length of the string in product description variable na equal to length hochi moro predefined function hala ता भितर मोर ए वेरिएबल टा पास कर दला तो ए जो स्ट्रिंग टा जो पास करछि तार लेंथ ता केते सेटा कोठी कैलकुलेट करी रखिबो मोर ए वेरिएबल भितर जो वेरिएबल टा मु डिक्लेयर करछि लेंथ माने कोन मु 5 साइज रो मु डाटा पास करछि कि 6 साइज रो डाटा पास करछि सेटा कोन न्यूमेरिक वैल्यू राइट पास करबो से 5 किबा 6 तो सेति पई मु जो वेरिएबल टा डिक्लेयर करछि एठी सेटा इंटीजर टाइप देछि कारण रिटर्न करबो से इंटीजर टाइप वैल्यू ही रिटर्न करबो तापर गोटे वेरिएबल मु डिक्लेयर करछि जोटा कि varchar मोर 70 देछि ता भितर मु वैल्यू पास करछि तो एई वैल्यू रो लेंथ केते सी आ भितर रखिया पय चाहूछि तो सी कोन कला लेंथ फंक्शन यूज कला देन से वैल्यू वेरिएबल टा पास कर दला कैलकुलेट कर दबो लेंथ केते अछि देन स्टोर करियो कोथरे मोर वेरिएबल भितर बुझला get the number of month and an employee has worked v tenure month between current date v hire date right month between टा होची मोर फंक्शन नेम तो करंट डेट जेति की अछि जेते जो डेट रु तमर हायर हेछि से माने जो डेट रु जॉइन हेछि कैलकुलेट कर दबो कैलकुलेट करी कोठ रखिबो एथे रख है तमे 4 वर्ष लाइन जॉइन हेछो कि 5 वर्ष लाइन जॉइन हेछो कि 3 मास लाइन जॉइन हेछो कैलकुलेट करी से रखि दबो बुझला SQL function in plsql example you can use SQL function to manipulate data. These functions are grouped into the following categories that is number, character, conversion, date, miscellaneous. Use sequence in plsql expression starting in 11g declare gote declare kala variable jar data type dala number begin then ta bhitare moro mysql dot next value mysql next value टा जोड़ा थिबो सेटा तमरो स्टोर करियो कोठी v underscore new underscore id right before 11g एटा होची 11 before 11g रे तम कोन करिया पड़थला v अंडर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला तापर सेटे कोन कला सिलेक्ट my underscore sql dot next value into तापर दिया होतला फॉर्म डुअल राइट एते सब मोर एबे 11 रे करबा नै सिंपली गोटे वेरिएबल डिक्लेयर करबो देन वेरिएबल इक्वल टू mysql डॉट नेक्स्ट वैल्यू देले से नेक्स्ट वैल्यू से असाइन कर बुझला असेसिंग सीक्वेंस वेरिएबल देखो नेक्स्ट वैल्यू कोन इन oracle database 11g you can use next value and current value document column in any plsql context where an expression of the number data type may legally appear although the old style of using select statement to query a sequence is still valid it is recommended that you do not use it right एई जिनसटा एबे भी अछि एई जिनसटा एबे भी अछि बट एते पूरा स्टेटमेंट लिखिबा अपेक्षा मो सिंपली स्टेटमेंट लिखि देले मोर हे गेला एथर बुझला before oracle database 11g you were forced to write a SQL statement in order to use SQL sequence of object value in a plsql subroutine typically you would write to a select statement to reference the procurement of next value and current value to obtain a sequence number this method created a usability problem right in oracle database 11g the limitation of forcing you to write a SQL statement to retrieve a sequence value is eliminated with the sequence enhancement feature sequence usability is improved the developer has to type less use resulting code is clearly right 11g रे तमरो लंबा लंबा कोड लिखिबार नै तार रिड्यूस हे गेला रिड्यूस हे कि तमे खाली तमरो इंपोर्टेंट जिंस गुडा खाली तमु रिटर्न करबार बुझला data type conversion convert data to comparable data types is of two types implicit conversion and explicit conversion
function to char, to date, to number, and to timestamp. Data type conversion कौन देखो? In any programming language, converting one data type to another is a common requirement. plsql can handle such conversion with scalar data type. Data type conversion can be of two types, that is implicit conversion and explicit conversion, right? Implicit conversion माने कौन? plsql attempts to convert data type dynamically if they are mixed in a statement. Consider the following example. Declare कला गोटे variable declare कला सेतरे मोर value देला 6000 आ गोटे variable declare कला varchar से देला 1000 तो 1000 टा कोन numeric format, right? Numeric format, but varchar रे सेटा asset हेइ परछु कोन पई single quotation दिया छि बोले, right? तो एटा हैला कोन टाइप कास्टिंग हे गेला बुझला एटा कोनती implicit conversion. तो सी कोन कला से v total underscore salary तो percentile attribute से यूज कला v underscore salary percentile type begin तापरे से v salary plus v salary hike तो दीटा को ऐड कला जोटा रिजल्ट आसो सेटा कोन मोर एठी आसो एटा एबे देखो एटा मोर कोन कैरेक्टर टाइप एटा मोर कोन कैरेक्टर टाइप एटा मोर कोन न्यूमेरिक टाइप बेले मो दीटा को ऐड कला पे जो वैल्यूटा आसीबो सेटा वैल्यूटा कोन न्यूमेरिक टाइप आसीबा दरकार कारण दीटा को रे मो वैल्यू ऐड करछि माने 6000 1000 7000 आसीबा दरकार 7000 टा कोन न्यूमेरिक वैल्यू तो कैरेक्टर आ न्यूमेरिक को ऐड जेतले करिवो सेतले तो तमारो एरर तो थ्रो करिवो कैरेक्टर आ न्यूमेरिक केमति ऐड होबो सेति पय से कोन कला टाइप कास्टिंग करला पर्सनल टाइप थ्रू दीटा को जेतले ऐड करिवो जो वैल्यूटा आसीबो न्यूमेरिक वैल्यू जो आसीबो सेटा से एक्सेप्ट करिवो एंड डिस्प्ले करिवो कोथरे v अंडरस्कोर टोटल बुझला एटा होची implicit conversion. In this example, the salary hike variable is a varchar 2 type. When calculating the total salary, plsql first convert salary hike to number हैला बुझला salary hike to एटा को number से convert करिवो and then perform the operation. The result of this result is of the number type. Implicit conversion can be between two character and number, character and date, right? Data where tomorrow implicit conversion है परिवो character to number, number to character, and character to date, date to character. बुझला? Data type conversion explicit. Explicit conversion कौन देखो? To convert value from one data type to another, use built-in function. For example, a convert a char value to a date or number value to use two date or two number respectively, right? It was explicit conversion. माने character ru two date मु जेबी और number ru two number को मु जाई बुझले. Then देखो implicit data type conversion देखो एटी देला मोर कोन मोर गोटे डेट देला राइट से डेट टा को मु implicit conversion करछि. Error in the data type conversion देखो जेमति v date of joining date equal to February 20 इटा होछि मोर कैरेक्टर हला मु आको केम दोछि आ जदि पूरा जदि लिखिबी एमिति कॉमा देके लिखिबी ताले मते एरर थ्रो करबो मते पूरा लिखिबार अछि डेट मंथ देन ईयर इटा होछि डेट फॉर्मेट रो प्रोटोकॉल जदि मु पूरा लिखिबी February 02 2000 हबन एरर थ्रो करबो बुझला. Explicit data type v underscore date of joining date to date रे कन्वर्ट करिवो सेथिरे मु देई परि February 02 2000 month dd माने ईयर मोर सिंबल देई परिबी पूरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देई परि जेमिति तमरो आसे जेमिति डेट फॉर्मेट जेमिति आसे तमरो सिस्टम रे जेम डेट फॉर्मेट जेमिति आसे बुझला. Date type conversion, note the three example of implicit and explicit conversion of date data type in the slide because the string literal begin being assigned to date of joining is in the default format. This example perform explicit conversion and assign the specified date to date of joining. The plsql return an error because the date that is being assigned is not in the default format. To date function is used to explicitly convert the given date in a particular format and assign it to the date
डाटा टाइप वेरिएबल डेट ऑफ जॉइन बुझला राइटिंग नेस्टेड ब्लॉक एटा हमें काली पढ़िबा ठीक अछि नेस्टेड ब्लॉक टा काली पढ़िबा नेस्टेड ब्लॉक रे तम जंदी सब क्वेरी जेमती थिला एसक्यूएल ले डिटो सेम थिंग हला ओके थैंक यू